Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will talk about my first experience with the Bangalore Metro, that is Namma Metro. Yellow Line has been started and I thought to try this, and it's been 5 to 7 years in Bangalore and this is the first time I am boarding a metro. So I thought to start with Infosys Foundation Station. In the night this station is looking very beautiful because it is recently inaugurated, so it was decorated. और आप देख सकते हैं they tried to make a tri-color thing but actually it's not looking like that. But yeah, we'll go to the station and I parked my bike here and then I went to the station. काफ़ी अच्छा स्टेशन बना हुआ है और ये जो पर्टिकुलर स्टेशन है कोनापन्ना अग्रहारा, इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय द इन्फोसिस. यहाँ से आप डायरेक्टली इन्फोसिस कैंपस में जा सकते हैं, उसकी कनेक्टिविटी बनाई गई है. टिकट बुक्स करने के लिए आपको आई वुड सजेस्ट, यदि आप रेगुलर यूजर हैं तो मेट्रो कार्ड ले लीजिए, स्मार्ट कार्ड, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन. इसके अलावा आप पेटीएम से भी बुक कर सकते हैं. BMRCL और पेटीएम का टाई अप है, तो आप वहाँ पे एक अच्छे से टिकट बुकिंग सर्विस है, उस पर आपको स्कैनर मिल जाता है. यू कैन स्कैन एंड यू कैन गो टूवर्ड्स द ट्रेन. टिकट की ठीक ठाक लाइन लगी हुई थी क्योंकि ऑलमोस्ट 5 PM हो रहा था और जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिटी के एरिया के जो भी ऑफिस में काम करने वाले लोग थे वो लोग आ रहे थे, तो काफ़ी रश था टिकट काउंटर पे. तो मैंने पेटीएम ही यूज़ किया, पेटीएम से बुक किया और फिर हम लोग बोर्डिंग के लिए ऊपर गए. तो ट्रेन स्टार्ट होती है बोमसांद्रा से 3 स्टेशन बैक. ट्रेन आ गई है, अब उसको बोर्ड करते हैं. ठीक ठाक रश है इसमें. बोमसांद्रा ऑलमोस्ट 3 स्टेशन बैक है, बट 3 स्टेशन में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग हैं. अब अंदर आ गए हम लोग, अब दिखते हैं आगे जाके. मुझे जाना है KR मार्केट तक, तो अभी मैं इतना रश था कि मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो मैं सीधे RV रोड पे उतर गया हूँ. यू कैन सी द रश. तो ट्रेन इज़ गोइंग नाउ. आई हैव टू गो डाउन एंड इंटरचेंज हियर. Now I am going down. We'll take the interchange for green line. We have to go towards the Madwara because I have to go to the Chickpet. तो चिकपेट जाने के लिए आपको मडवारा साइड के लिए ट्रेन पकड़ना होगा फ्रॉम द ग्रीन लाइन. तो अभी आपको यहाँ नीचे आने के बाद एक प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए फिर से ऊपर जाना होगा, क्योंकि वो इंटरचेंज के लिए आप नीचे से आके क्रॉस करते हो फिर ऊपर जाते हो. तो आपको साइनेज बने हुए हैं और थोड़ा सा आई वुड से कन्फ्यूजिंग, थोड़ी सी और मार्किंग लाइक फुट मार्क्स वगैरह होता तो ज़्यादा बेटर होता. अब थोड़ी देर में ट्रेन आ जाएगी और हम लोग भी निकल गए. तो इसके बाद मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ और इसके बाद मैं उतरूँगा KR मार्केट पे. और KR मार्केट पे उतरने के बाद मुझे कुछ काम है वहाँ पे, एक शॉप पे जाना है, फिर वहाँ से कुछ काम करके मुझे वापस आना है. तो अब मैं KR मार्केट स्टेशन पे उतर गया हूँ. आई एम कमिंग आउट ऑफ द कृष्णा राजेंद्र मार्केट स्टेशन, यू कैन सी. एंड आफ्टर माई वर्क आई अगेन केम बैक टू द चिकपेट स्टेशन. और चिकपेट से मैंने दोबारा ऑन बोर्ड किया और टिकट सिमिलरली पेटीएम से बुक किया. बहुत ईजी है पेटीएम से बुक करना. आपको सिर्फ नम्मा मेट्रो सर्च करना है. एंड यू सर्च इट, यू विल गेट द ऑप्शन बुक द टिकट्स. यू पुट द स्टेशन फ्रॉम वेयर यू वांट टू गो. लेट्स से यू वांट टू गो फ्रॉम द बोमसांद्रा टू RV रोड, देन पुट फ्रॉम बोमसांद्रा टू RV रोड. Now I have onboarded the train and reached RV Road now and will interchange here for the Yellow Line RV Road to Bommasandra Metro. Now I am going towards the Bommasandra side, so we'll go to the platform number 3. अभी हम इधर से आए चिकपेट की तरफ से, फिर अभी इधर जाना है बोमसांद्रा की तरफ. 15 मिनट दिखा रहा है ट्रेन आने में. थोड़ी देर वेट करना पड़ा क्योंकि अब फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है. फिर ट्रेन आई और हमने ट्रेन बोर्ड कर लिया. Now I am back to the Infosys Foundation Konappana Agrahara metro station. Train will leave towards the Bommasandra. I will leave the station. So let's talk about few things on my experience. So my experience was too good. It reduces the travel time, but for the Yellow Line, the thing is that we have a very less frequency. So we have only 3 trains. So every 25 minutes we are receiving a train, and that is causing a delay. So let's say if you are saving 25-30 minutes in your travel, because I think in 20 minutes I was in Silk Board from Electronic City, and then
towards RV Road, I think 25 minutes. Within 25 minutes we were there. But if you are saving that 25 minutes, you are also losing 25 minutes or 15 minutes based on the what time you get the train. Let's say you reached station 15 minutes before the train is about to come, or maybe 25 minutes before the train is about to come. So these 25 minutes, 50 minutes we are losing. So once the more trains are here, I think we will be good. So you can see here at RV Road, one train is 10 p.m, one train is at 10:25 p.m. So that's the difference. यहाँ पे गाड़ी पार्क किया, उसने बाइक पार्क किया था, यहाँ पे हेलमेट छोड़ के गया था और लगभग 2-2.5 घंटे बाद आ रहा हूँ पूरा घूमघाम के मेट्रो में। मेरा हेलमेट भी यहीं पे है, लॉक नहीं था, आप देख सकते हैं, लॉक भी नहीं था, भाई नहीं लॉक करता होगा कहाँ से। अब जा रहे हैं वापस। We have good parking space at the Infosys Foundation station, even at the Bommasandra. You can say at each station, but here it's very well managed. We see the buses also, we see the auto parking also, so you can easily get bus and auto from here. रात को आप देख सकते हैं, it's fully decorated. All the things are lit up. You can see that different color lighting. I prefer the single color lighting, but nowadays it's multicolor lighting to decorate buildings has been a norm. Everywhere we see that, even the breezes or government buildings, everything is lit up like this. But still it's looking too cool. So overall it's a very good experience with the Namma Metro. I hope the other areas and other phase which are currently under construction will complete soon, and we will have a complete network of metro which will ease the traffic situation in our city. So thanks for watching. We'll see you in the next video. Thank you.